get RA. Therefore, RA will be equal to 6 minus 2.7, or RA will be equal to 6 minus 2.7. We get 3.3 kilonewton. So this is the first step that you determine the reactions under the supports RA and RB. Right. उसके बाद sectioning करेंगे. Second step is section between AC and draw the free body diagram. So we take section like this. At any distance x, we pass section like this. इसकी फ्री बॉडी डायग्राम इससे पहले वाले पोर्शन की कुछ ऐसे बन जाएगी. तो डाउनवर्ड फोर्स शो करेंगे और बेंडिंग मोमेंट शो करेंगे. डाउनवर्ड इज Vx एंड दिस इज Mx. दिस इज RA की वैल्यू पता है अब कितनी है? 3.3 है. 3.3 एंड दिस डिस्टेंस इज x up to this. Okay. Now we can calculate very easily. Sum of all vertical forces is equal to 0, positive upward. तो ये वाली इक्वेशन लगाएंगे तो ये ऊपर को 3.3 है माइनस Vx इक्वल टू 0, और वी कैन से Vx इज इक्वल टू 3.3 किलो न्यूटन. सो इससे कांस्टेंट वैल्यू. मतलब ए और सी के बीच में मैं कहीं भी सेक्शन करूं एट एनी डिस्टेंस x, शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ x. देन वी टेक मोमेंट. Sum of moments about point x equal to 0, positive clockwise. Same procedure you have to repeat every time. So we take moment about this cut point. जहां से मैंने इसको कट किया, first moment of 3.3. So this will be 3.3 into x, force into total distance x. This will be positive because this is upward force and this will rotate the beam in clockwise direction. Then minus mx equal to 0, which implies that mx is equal to 3.3x. So this is the equation of bending moment. I call it 2. Okay. Okay. So this is first part. Now I calculate the values at x equal to 0, that is point A. So MA will be equal to 0. जब मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो MA 0 आ जाएगा. Now at x equal to 1.5, that is point C, we get MC equal to 3.3 into 1.5. तो ये C के ऊपर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.95. So MC is 4.95 kilonewton meter. Okay. Right? So it will vary linearly. A पे 0 रहेगा और C पे 4.95 रहेगा और straight line रहेगी. So I can, this is the first part. Then second part is to take section between C and D. So when you take section between C and D, you take section anywhere like this. कहीं भी section ले सकता हूँ C और D के बीच में, and draw the free body diagram of left side. So it will be like this. तो ये कुछ ऐसे रहेगी. Now point C is over here. तो यहाँ से ये UDL भी सारा आ जाएगा और ये 3.3 है. 3.3. So this is 4.4
किलो न्यूटन पर यूनिट मीटर, तो यहाँ पे ये Vx और ये mx जो आपको कैलकुलेट करनी है। नाउ डिस्टेंसेस मार्क करेंगे। नाउ दिस डिस्टेंस इज x, so this distance is x, this point is point A, this is C. Okay, so now this is the free body diagram, right, of left hand side when you take section in CD. Again, by repeating the same process, sum of vertical forces equal to 0. Okay, तो C और D के बीच में वर्टिकल फोर्सेस 3.3 अपवर्ड और ये डाउनवर्ड है, ये वाली 4.4 किलो न्यूटन पर यूनिट मीटर। तो ये कितनी लेंथ पे है? -4.4 इंटू एक्स माइनस 1.5 पे है, माइनस Vx इक्वल टू 0। मतलब आपने देखना कि यहाँ से दिस डिस्टेंस इज 1.5, तो बाकी कितना बचा? x माइनस 1.5। तो ये टोटल 1 मीटर पे 4 किलो न्यूटन है। 4.0 सो 4 किलो न्यूटन 1 मीटर पे है, तो x माइनस 1.5 मीटर इज अ टोटल लेंथ। नाउ इस पे कितना होगा? इट मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1.5, सो दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो इट विल बी नेगेटिव। देन दिस Vx माइनस, तो Vx विल वेरी लीनियरली। Vx की इक्वेशन क्या रहेगी? 3.3 माइनस 4x प्लस 4 इंटू 1.5, तो ये इक्वेशन Vx की बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 6, तो दिस विल बी 6, 9.3 माइनस 4x, कुछ ऐसे इक्वेशन आ जाएगी शेयर फोर्स की बिटवीन C एंड D। तो मैं इससे लीनियर इक्वेशन, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ x, इसकी पावर 1 है तो लीनियरली वेरी करेगी, राइट। एट x इक्वल टू 1.5, तो शेयर फोर्स VC की वैल्यू आ जाएगी, जो पहले वैल्यू आई थी सेम ही आएगी, सो इट विल बी 3.3। तो जब आप पुट करोगे 9.3 माइनस 4 इंटू 1.5, तो VC की वैल्यू 3.3। एट x इक्वल टू D, ना D पे 3 है, 3, तो VD, जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा, 9.3 माइनस 4 इंटू 3, तो दिस विल बिकम नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2.7 किलो न्यूटन। सो x की वैल्यू C पे है 1.5, D पे है 3, तो मैंने पहले 1.5 पे कैलकुलेट किया, 3.3 आ गई, फिर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो -2.7 किलो न्यूटन आएगी। सो नाउ आई कैलकुलेट द शियर फोर्स विल बी 0 एट, तो 0 कहाँ पे होगी? तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को 0 के बराबर पुट कर दूंगा, 9.3 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9.3 डिवाइडेड बाय 4, तो x विल बी इक्वल टू, तो x की वैल्यू शेयर फोर्स विल बी 0 एट x इक्वल टू 2.32 मीटर। तो इस पॉइंट के ऊपर जाके शेयर फोर्स 0 हो जाएगी और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। देन यू कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स about point x equal to 0. When you apply this, take moments about this point, right? Okay, so 3.3x positive, moment of 3.3 into distance x, then moment of this 4, this will be minus 4 into x minus 1.5, okay? तो ये टोटल फोर्स आ गई। नाउ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सो दिस विल एक्ट ओवर हियर, ये कुछ यहाँ पे एक्ट करेगी, so you have to take this distance, that is half of this। तो ये जो डिस्टेंस है ये था x माइनस 1.5, तो x माइनस 1.5 बाई 2 माइनस mx इक्वल टू 0।
इफ यू सिंप्लीफाई यू गेट mx की इक्वेशन आ जाएगी 3.3x minus 2x minus 1.5 square. So this is the law of bending moment. Question number 4. Now calculate at x equal to 1.5 your mc. mc की वैल्यू सेम रहेगी जो पहले कैलकुलेट की है 4.95 किलो न्यूटन मीटर. देन कैलकुलेट एट x इक्वल टू 3 मीटर, तो md आ जाएगा. md की वैल्यू आएगी 5.4 किलो न्यूटन मीटर. देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज एट x इक्वल टू 2.3. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी 6.31. तो ये तीन वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम C to D by putting x equal to over here. Okay, right. Then third, you can also take section between D and B and repeat the same procedure, but we can draw now. Now we'll draw the diagram. डायग्राम बना के देखेंगे फर्स्ट. So we draw the diagram. We draw the beam like this with different points A, B, then C, and then D. This is C, this is D. Right. Now we draw shear force diagram first. Okay. So first the value is at point A shear force is positive. कितनी वैल्यू है 3.3 है. और आपको C it will go like this, constant value, positive. Now from C to D, so D पे इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, right, some value over here, and I join with a straight line like this. So this value is minus 2.7, right, and it will be 0 over here. Shear force will be 0 at this distance, x equal to 2.32, right. And after, some portion is positive, some portion is negative, and after this it will go constant. D और B के बाद ये constant हो जाएगी because there is no other force, so it will remain constant. So this will be negative as well. So 2.7 minus. So this is the complete shear force diagram. Similarly, we draw the bending moment diagram. Over here I draw this is point B, this is A, then this is point C and D, and this is the maximum point over here. So this is C, this is D. Now the bending moment is from A to C, it's a linear value, straight line. So C पे इसकी value है 4.95, so this ordinate is 4 point, this point is 4.95, right. Then point D के ऊपर है 5.4, so I draw 5.4 little larger to this value is 5.4, and under this maximum value we get some maximum value over here, which is this ordinate is 6.31, and I connect these 3 points with a parabolic curve like this, parabola like this. Okay, then after this you get a straight line. And when you take section in third portion, you get a straight line. All are positive. This is BMD.